Hello everyone, welcome to Computer Knowledge. Previous video रे हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट कंप्लीट करथिले. आज हमें देखिबा बैलेंस शीट ग्रुप्स. चलंतु आरंभ करिबा. Balance sheet groups. Balance sheet groups is a positional statement which is prepared to find out the position of a company on a particular date. Balance sheet has two sides. The left hand side is called liability side and the right hand side is called asset side. In a balance sheet, the total assets is equal with the total of liabilities. यार अर्थ होची बैलेंस शीट माने यह कंपनी पोजीशन डिफाइन करने सहित यह कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस डिस्प्ले करथाय. तापर कोन ना बैलेंस शीट को दुई विभक्त करायछि. लेफ्ट हैंड साइड को लिएबिलिटी साइड एंड राइट हैंड साइड को एसेट साइड्स कहै. तापर देखिबा बैलेंस शीट ग्रुप्स को समुदाय 9 भाग विभक्त करायछि. सेगुडा कोन कोन आसंतु देखिबा. फर्स्ट पॉइंट होची कैपिटल अकाउंट. The amount of money which is introduced by the proprietor for the commencement of business is called capital. Type of capital like proprietor capital, partner capital, share capital, etc. comes under the capital account. यार अर्थ होची फॉर एग्जांपल श्रीनिवास बोली जने लोक तार बिजनेस बा कंपनी रे किछि टंका लगाइला. अकाउंटिंग अर्थ रे एही टंका को कैपिटल बोली कहै जाय. यार अर्थ बिजनेस रो मालिक बिजनेस जे टंका लगाई थाए ताको कैपिटल कहै जाय. सेही परि बिजनेस रो मालिक अलग अलग प्रकार होई थांती. जदि तमे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बा लिमिटेड कंपनी कथा कहिबो ताहाले शेयर होल्डर माने मालिक होई थांती बा पार्टनरशिप कथा कहिले पार्टनर माने मालिक होई थांती. तापर देखिबा कैपिटल अकाउंट हैज टू सब ग्रुप्स. कैपिटल अकाउंट रे दुटा सब ग्रुप्स अछि. फर्स्ट वन होची reserve and surplus. The amount of money which is kept for future uncertainties is called reserve and surplus, and the other hand surplus is the amount of money which is residual amount out of the profit of a company. Reserve is different type like general reserve, capital reserve, divided equalization reserve, etc. यार अर्थ आमे गाड़ी भी पेट्रोल रिजर्व रखी था. सही परी बिजनेस भी फ्यूचर में मत गोटे बिल्डिंग बनैयार अच्छी तो गोटे थरके तो बिल्डिंग हो पार ना. से 4 वर्ष पर बिल्डिंग बनैया भावुच ताहले सब वर्ष निज इनकम रु किछि पार्ट रिजर्व करबो. याको रिजर्व कुआ जाय. सरप्लस माने कोन. सरप्लस माने होची तुम लास्ट ईयर इनकम जोटा होइथे ताहाको सरप्लस बोली कुआ जाय. तापर देखिबा रिटर्न अर्निंग्स. Second point तार होची return earnings. The amount of money which is deducted out of the surplus profit of the company for the purpose of any future investment proposals in order to diversify the business is called return earnings. It is one type of current liability. यार अर्थ बिजनेस रे हेउथिबा प्रॉफिट बा इनकम को कंपनी दुई भाग रे बांटी दे. किछि को शेयर रे लगाई दे तो आउ किछि को फ्यूचर पई रखी दे. से फ्यूचर पई जे अमाउंट ता रखी थाए ताहाको रिटर्न अर्निंग को. सेकंड पॉइंट होची लोन्स एंड लिएबिलिटी. ऑल टाइप ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स which are payable more than one accounting year generally which maturity is 1 to 5 year is called loan and liability. यार अर्थ होची जेउ लोन हम काटर आनिथिबा ताहाको लोन बा लिएबिलिटी को जाय. लोन बहुत प्रकार होई पारे जेपर कि बैंक लोन एंड फ्रेंड लोन. लोन डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स सिक्योर लोन एंड अनसिक्योर लोन. फर्स्ट सिक्योर लोन को जाय. Those loans which are taken by the business by hypothetic its assets or by providing its assets as on security on which the amount of liability is guaranteed for repayment purpose is called secure loan. Example: issue forfeiture certificate of deposit, commercial paper or any other loans taken by the company from any microfinancial institute or from any financial institute which provide the loans on mortgage basis. यार अर्थ होची कौनसी जिनस बंधा पकई जो लोन आनी था ताको सिक्योर लोन कह जाए. फॉर एग्जांपल लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी. जदि तुम घर बंधा पकई कौन लोन आनी था ताको सिक्योर लोन कह जाए. सेकंड पॉइंट देखिबा अनसिक्योर लोन. दोज लोन्स व्हिच आर टेकन विदाउट प्रोवाइडिंग एनी सिक्योरिटी आर कॉल्ड अनसिक्योर लोन्स.
On this type of loans, the loan amount is not supported by any asset to the borrowed company. For example, loan from friends, loan from relatives, loan from managers, or taken a loan from any person without any security. यार अर्थ होउछि अनसिक्योर लोन माने लोन तो आमे मानेछे किंतु ता बदले कोनोसी जिंस बंधा पकाइने. फॉर एग्जांपल जेतेबेले आमे निज सांग ठारू बा बंधु मान ठारू लोन नहीं थाउ ता बदले आम कौन जिनस बंधा पकाइबा पड़ी न थाए ताहाको अनसिक्योर लोन कहा जाए. थर्ड पॉइंट होउछि liability. The liability is the amount of due which are payable by company within one financial year are called liability. यार अर्थ होउछि कंपनी को वन फाइनेंशियल ईयर रे पेमेंट करबा को पड़ी थाए which is called liability. Liability are three sub groups. First group होउछि sundry creditors. What is sundry creditors? Those person who supply materials or any goods on credit at where the payment will done later are called sundry creditor. The group of creditors who supply us the materials and goods are comes under this group. Sundry creditor अर्थ होउछि सप्लायर जहां आमे जिनस उधार आनी थाउ. तापर नेक्स्ट पॉइंट देखिबा ड्यूटीज एंड टैक्सेस. All types of taxes, whether direct tax and indirect tax, whether where it is payable monthly or quarterly or annually, that comes from the taxes. The taxes like sales tax, VAT full from which value added tax, GST, excise tax, benefit tax, collected at source tax, tax deducted at source, etc. comes under this group. यार अर्थ होउछि आमे गवर्नमेंट को जो डायरेक्ट टैक्स बा इनडायरेक्ट टैक्स पेमेंट करथाउ ताहाको ड्यूटीज एंड टैक्सेस कहा जाए. डायरेक्ट टैक्स माने होउछि आमे जो जगह रे रहउछे तार टैक्स डायरेक्ट गवर्नमेंट को पेमेंट करथाउ. सेही परि इनडायरेक्ट टैक्स अर्थ होउछि जेतेबेले कोनसे द्रव्य बा जिनिस बाजार रु किनि थाउ सेतेबेले दुकानी को सेही द्रव्य रो टैक्स देई थाउ एवं सही टैक्स को नहीं दुकानी गवर्नमेंट को पेमेंट करता है. यहाँ को इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाए. नेक्स्ट पॉइंट देखिबा प्रोविजन आर नोन एज liabilities which is don't as known exactly. The provision like item provision are provision for depreciation, provision for doubtful debt, etc. comes under this group. यार अर्थ होउछि फॉर एग्जांपल मानकर सैलरी कहा को लास्ट मंथ दबार अच्छे किंतु तुम ताको सैलरी पेड तो जाए करना सही लेजर प्रोविजन रे जाई थाए. सही परि जेउ लेजर रे ड्यू अनपेड आउटस्टैंडिंग वर्ड लागि थाए ताको प्रोविजन रे बनाई थाए. फॉर एग्जांपल अनपेड बिल जहा कि तुम बिल पेमेंट करिया कथा किंतु तुम पेमेंट करना. तापर देखिया फोर्थ पॉइंट फिक्स्ड एसेट्स. दोस एसेट्स which are purchased once and whose benefit are taken for a long period of time is called fixed assets. Fixed assets give the benefit at futures. For example, land and building, plant and machine, furniture and factories, etc. Those assets whose benefits can be used for the long period of time. यार अर्थ होउछि फिक्स्ड एसेट्स एपरि जिनस कहबा जहाको आमे व्यापार बा बिजनेस रे अधिक समय यूज करथाउ. फॉर एग्जांपल लैंड, बिल्डिंग और फर्नीचर. फिफ्थ पॉइंट देखिबा. फिफ्थ पॉइंट होछि करंट एसेट्स. दोस एसेट्स व्हिच कैन कन्वर्टेड इनटू कैश विदिन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम दैट इज विदिन 1 year is called current assets. The current assets has 6 subgroups. Current assets माने कोन? करंट एसेट्स आमे सेतेबेले यूज करथाउ जेतेबेले लेजर रे रिसीवेबल, एडवांस पेमेंट एंड सिक्योरिटी पेड एही प्रकार वर्ड यूज कराई थाए. फॉर एग्जांपल जेतेबेले कोनसे अमाउंट आसीबा को थाए जेपर कि बिल रिसीवेबल बा जेतेबेले एडवांस पेमेंट करथाउ ता करंट एसेट्स रे होई थाए. करंट एसेट्स रो समुदाय 6 सब ग्रुप रही छे. फर्स्ट होची कैश अकाउंट. व्हाट इज कैश अकाउंट? All type of cash maintain that business like cash in hand, cash at bank, cash at branch, cash on transit are comes under the cash account.
यार अर्थ होउछि जेतिक टंका हम हाथ रे थाए ताको कैश इन हैंड अकाउंट कहै छै। नेक्स्ट पॉइंट होउछि बैंक अकाउंट। व्हाट इज बैंक अकाउंट? All accounts which are opened by company to maintain the surplus cash is called bank account. Generally, the current account opened by the company with a bank taken under by this type of group. यार अर्थ होउछि बैंक अकाउंट अंडर एपरि एक बैंक अकाउंट आसे जहाँकि डेबिट होता है। फॉर एग्जांपल करेंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। करेंट अकाउंट बिजनेस रिलेटेड होता है, सेविंग अकाउंट ऑल ऑफ द पीपल क्रिएट करते हैं। तापर नेक्स्ट पॉइंट देखा सन्ड्री डेप्टर। सन्ड्री डेप्टर कौन? Those persons to whom we issued the good on credit is called sundry debtor. Generally, the credit customer are called sundry debtor. Sundry creditor अर्थ होउछि कस्टमर जहाको आमे माल बिक्री करथौ बा सेल करथौ ताको सन्ड्री डेप्टर कहै छै। नेक्स्ट पॉइंट होउछि स्टॉक। व्हाट इज स्टॉक? The part of goods which are left at the end of year is called stock. The stock is different type like that is stock of raw material, stock of work in progress, WIP, stock of fixed goods, FG are comes under the stock account. We can also classify the stock at opening stock or closing stock. यार अर्थ होउछि वर्षर शेषर जो रॉ मटेरियल रहता है ताको स्टॉक कहे छै। नेक्स्ट पॉइंट देखिबा डिपॉजिट। What is deposit? All type of deposit made by the company which can be liquidity is nature like security deposit, electric deposit, deposit for office rent etc. comes under this group. यार अर्थ होउछि आमे सब रेंट रे घर नै थाउ बा तमे ऑफिस रेंट रे नै थाउ सेथि पय 2-3 मास रेंट डिपॉजिट दै थाउ ताको डिपॉजिट कहै छै। नेक्स्ट पॉइंट होउछि loan or advance. Generally, all type of short-term loan at advance given by the company which can be releasable within a short period of time is called loan and advance. यार अर्थ होउछि जे लोन आमे देई थाउ एग्जांपल जेतबेले आमे काहाकू लोन देई थाउ बा जे कर्मचारी को लोन देई थाउ ताको लोन और एडवांस कहै छै। नेक्स्ट पॉइंट देखिबा इन्वेस्टमेंट। The investment is generally all type of long-term investment made by the company is called investment. Investment is like investment of stock market, investment for other company, investment to open a new branch etc. Investment माने होछि जदि बिजनेस रे टंका केउठु लगै छै जेपरि फिक्स डिपॉजिट शेयर केउठु किनला बा केउठु बॉन्ड तयारी कला सेथिरे जे इनकम होइथाय ताको इन्वेस्टमेंट ग्रुप रे रखा जाय। नेक्स्ट पॉइंट देखिबा ब्रांच एंड डिविजन। The company is who maintain this account different branches and divisions. Such type of companies maintain the branch investment and division investment. For example, branch BBSR, branch of Puri, branch of Paradip etc. यार अर्थ होउछि मानकर निज कंपनी ब्रांच वाइज केतोटी जगह रे खोलिछ टैली एक्सरसाइज रे कंट्री वाइज 51 ब्रांच अछि तो सेथि पय जे लेजर क्रिएट हुए टैली तार ग्रुप रहबो ब्रांच एंड डिवीजन। नेक्स्ट पॉइंट होउछि प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। Those expenses which are included before the commercial production of the company are called the preliminary expense. The preliminary expenses are capitalized and charged equal amount as an expense to every year. Those expenses like research and development serve expenditure and other expenditure which are done before starting the company are called preliminary expenditure. The preliminary expense is called miscellaneous expenses. यार अर्थ होउछि जेतबेले तमे बिजनेस स्टार्ट करता ता पूर्व जो खर्च होइते ताको प्रिलिमिनरी एक्सपेंस बिल कहै छै। नेक्स्ट पॉइंट देखबा सस्पेंस अकाउंट। The suspense whose nature of transactions is not known is called suspense account. The suspense account is a temporary account which is maintained when trial balance does not match after transacted
the balance to the suspense account, then you rectify the error and eliminated the suspense account to put the particular account. यार अर्थ होउछि एथिरे एपरि एक ट्रांजैक्शन रखा जाए जहाँकि अननोन सोर्स रो होइथाय सपोज तुम मुंबई सहर रे 12टी कस्टमर अछंती तांको मध्यरु जणे 20,000 टका तुम अकाउंट को ट्रांसफर करछि किंतु अकाउंटिंग स्टेटमेंट रे जणा पडु नै जे किए एक्चुअली 20,000 टका ट्रांसफर करछि सेथि पय प्रोविजनली अकाउंटिंग करथवा समय रे याको सस्पेंस अकाउंट नाम रे क्रिएट करिथांती किंतु परे जेतेबेले डिटेल्स मिलिबो ताको क्लियर करिवो कारण सस्पेंस कोनोसी अकाउंट ग्रुप नुहे यह टैली रा कन्वेंशन पय दिया जाई थाए मनकर सस्पेंस ग्रुप न थांता ताहाले जे 20,000 टका आसीची ता का अकाउंट रे रखैता निज अकाउंट रे रखले आगु को प्रॉब्लम होइताना सेति पय सस्पेंस अकाउंट क्रिएट होई थाए। आपन जदि वीडियो भल लागिथबो ताले लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट निश्चय करिवे। धन्यवाद।